Due to technical issue, opening remarks of speakers and teachers are not available, but rest of the program is available. Sorry for the inconvenience and enjoy this program. और सीए के स्टूडेंट्स में पढ़ाई के साथ साथ एक खेल का जरिया पैदा करना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं, और मैं वेलकम करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं बालकिशन जी का, कि जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी थीम पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सभी को प्रोत्साहित किया है कि हम लोग सभी ये कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद। ओवर टू मोनिश। Thank you so much, Hitesh, for your kind words. Thank you so much. Okay, I guess Balkishan Agrawal sir, are you able to hear the voice? Okay, there might be some technical problem. So now, starting with the session now, introduction of the teacher. ये जो हमारा एक स्पेसिफिक सेशन है, अंडरस्टैंड, ये सेशन है between the conversation between, if you understand, speakers of the session and the teacher of our session. तो कहीं ना कहीं दोनों का इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टीचर। कहीं ना कहीं आपके स्क्रीन के सामने जो हमारे टीचर बैठे हैं, उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्हें सब जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक पर्टिकुलर वर्ड उनके लिए यूज करना चाहूंगा, एंड दैट वर्ड विल बी मिस्टर परफेक्ट एंड मिस्टर ऑलराउंडर। कहीं ना कहीं हर जगह, ठीक है, कहीं ना कहीं हर किसी को जब भी किसी की मदद की जरूरत पड़ती, ओके, दैट रिस्पेक्टिव पर्सन वाज ऑलवेज रेडी विद द हेल्प। So I would like to welcome Mr. Mahesh Jaiswal sir, being the teacher of our session. Now, टीचर के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि टीचर कौन था, ये कहीं ना कहीं आप जानते भी हो टीचर को बहुत अच्छे से। अब कहने की स्पीकर्स की बात करूं, because as I said, this session will be completely between the teacher and the speakers. अब अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं, we have 3 speakers today for the session. Number 1, CA Jyot Bakshi. Okay. Number 2, CA Tanay Mehta, and number 3, CA Dhruvang Parekh. Okay. Now, speakers basically understand, इन्होंने अपने लाइफ में एक माइलस्टोन अचीव किया है। अपने लाइफ में उन्होंने जिस चीज के बारे में ड्रीम किया था, उन्होंने वो अचीव किया है। तो अंडरस्टैंड, दे आर ओके फुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फुल ऑफ डेडिकेशन, लेकिन इसके साथ साथ they were also the obedient students. Okay, so you understand, starting with the introduction of our first speaker, that is Jyot Bakshi. So CA Jyot Bakshi is an associate member of our fellow institute, that is the Institute of Chartered Accountants of India, since July 2018. Okay, after completion of his chartered accountancy course, he pursued forensic accounting and fraud detection course of ICAI. ठीक है, जहां पे कहीं ना कहीं आपने इस लेवल में पढ़ा है that the financial statements should be free from any biasness, the financial statements should be free from any mistakes and frauds. तो वो जो फ्रॉड पकड़ने का काम होता है, जितनी भी गलत एक्टिविटीज किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वो अगर आइडेंटिफाई करने का काम होता है, तो वो मिस्टर CA जोत बख्शी सकता है। He has an entrepreneur inclinations and involves himself in various discussions and finding practical solutions relating to the same for various organizations. Okay. We would like to welcome CA Jyot Bakshi sir. Now, moving towards our next speaker, okay, CA Tanay Mehta sir. Okay, now अगर उनकी achievements की मैं बात करूँ, तो first of all, he has cleared his chartered accountancy course in his first attempt, all through in his first attempt, and in every individual attempt, he had got ranks. Okay, city rank, national rank, India level ranks also. Okay, he is also pursuing his CFA, that is Chartered Financial Analyst, and he is pursuing, or he is at level 3 right now. Okay, he is a student of IIM Kozhikode. ओके, हर किसी का सपना होता है, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे IIM जाना है। अगर मुझे मैनेजमेंट
सीखना है, अगर मुझे MBA करना है, तो I want to join IIM. Now he is one of the student of IIM Kozhikode. Okay, he has done his MBA internship at PwC US Advisory. India selected to represent IIM Kozhikode in CFA Research Challenge at zonal level. Okay, so कहीं ना कहीं, as I said, okay, every speaker has something achieved in his life. तो कहीं ना कहीं अभी तनय मेहता सर उसी फेज में जो उन्होंने अपना CA कंप्लीट किया और आगे के उनके जितने भी ड्रीम्स है वो पूरे कर रहे हैं. Now, talking about our third speaker, CA Druvang Parikh sir. Okay, Druvang Parikh sir is a partner at Naresh & Company. He is a visiting faculty for indirect taxation at Maharaja Sayajirao University, Vadodara. He is a national faculty also and speaker of Institute of Chartered Accountants of India on the topic relating to indirect taxation. Okay, there is a book, there is a publication which is known as Taxman. Okay, so in Taxman, it is a nationwide publication where Druvang Parikh's articles have been published on various topics of indirect taxes. Till date, 7 articles have got published, including articles written at the time of service tax and central excise regime. अभी हमको सबको पता है that now India follows one tax system, that is GST, right? जब central excise और service tax हुआ करता था तभी भी कहीं ना कहीं he was proficient in indirect tax regime. So again, I would like to welcome all the 3 speakers for the session, CA Jodh Bakshi sir, CA Tanay Mehta sir, and CA Druvang Parikh sir. Now, moving forward, taking the session forward. Okay, it is rightly told by T. Bennett, be thankful for everything that happens in your life. It's all an experience. Okay, जो भी आपके लाइफ में कुछ भी होता है, ठीक है, take it in a positive way and take it as an experience. और अगर मैं experience की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक student और एक teacher का जो relationship होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही ज़्यादा pure होता है. So I would like to request, okay, the speakers one by one to share their memorable, okay, and life-changing memories with our teacher Mahesh sir. Over to you, Jodh Bakshi sir. Yeah. Am I audible now? Yes, sir. Yeah. Yeah. So first of all, thank you, Monish, for such an introduction. Before I start with anything, I would like to wish a very happy Teachers' Day and give my humble regard to Mahesh sir. Not only Mahesh sir, but Hitesh sir, Balkishan sir, Druvang sir. I could also see Soham sir is present in the meeting, Archie ma'am, Arpan sir is also present in the meeting. All of those seniors and right up to all the colleagues that I know, Vaishwik, Monish, and also Tanay Bhai, all of you have been somewhere or the other a mentor for me throughout my journey. So I would like to wish a very happy Teachers' Day since I've learned something or the other from every one of you. Yeah. And first of all, also I would like to thank Hitesh sir and Balkishan sir for giving me this opportunity of celebrating Mahesh sir's successful journey on this very day. I believe I do not believe in one single day to convey our feelings. But of course, there should be one such day where we celebrate a journey. And what better day than today for Mahesh sir? So yeah, when I think of Mahesh sir, the first thing that comes to my mind is all of us as his students would agree that he would just come besides us, arm around our shoulders or arm on one shoulder and say, yes dear, yes dear. That very feeling of one own self that we get by having Mahesh sir besides us is truly very special. Second thing, we all know that the number of degrees and the educational qualifications that Mahesh sir has
you would never see that being reflected in his attitude, in its approach. He is one of the very grounded and down to earth person that I have seen, and that's what makes myself special. As we are here to discuss some of the untold stories, I would just pick up random things from discrete sources from my journey with Mahesh sir, for for all to know and understand how different sir is in various aspects. There was one incident where a class is going on. He would All of us students would agree a class is going on, and he would take a break, 5 minutes break. In that 5 minutes break, sir would optimally utilize to plan a cricket match. And he would say, બધાને phone કરી દો, player ભેગા કરી દો. Let's he will motivate us to say that let's complete our task in an efficient way, and then also enjoy it by way of sports. That yani that's what he is following, both of his passions, uh, be it teaching or be it sports. Also we would also know that sir, when we talk about him as a sports person, there is one very good quality that I could observe from Mahesh sir, that he, as much as he loves playing the sport, he truly loves the sport because he likes promoting the sport. He would on any day sit on the bench so that I would play, sit on the bench so that someone else who is coming rarely to the field, rarely to the match, would be able to play. He's Since many years he is promoting the sports across the city and across the profession in a way that more and more people get involved. Doesn't matter that he is on the field, but he lives the game in true spirit. There are certain anecdotes or certain incidents, uh, which are in a way funny, as well as some sort of hidden element is present in those things as a student that probably not everyone might know. We always used to, as a student, feel that what if Mahesh sir wants to do PhD? Will he be able to find a guide? That's a question. इतनी सारी डिग्री है, सर को शायद गाइड ही ना मिल पाए. इन अ सिमिलर वे ऐसा भी बोलते थे कि we were fortunate that when we were studying with and under Mahesh sir, sir got married. So we also used to kid around, saying people have various conditions while uh, before deciding the marriage, that XYZ or ABC is some of my likings or this or that. So we would always kid around saying महेश सर की पहली कंडीशन होगी कि एवरी संडे मैं नवलखी पे क्रिकेट खेलने जाऊंगा. If that is agreed, only then. So I am sure Neha ma'am must have agreed to that, and now even Ditya will be aware that this is going to be a scenario. But having said that, what I've understood from my journey with sir is, as much as we like Mahesh sir as a teacher, he truly stands out as a human being more than anything for me when I think of sir. કે it's very well said in Gujarati, આપણે કહીએ કે મસ્ત માણસ છે યાર. Those three words are those typical three words नहीं जो हम otherwise सोचते हैं, three words, but मेरे लिए महेश सर के लिए three words है मस्त मानस છે यार. That's how candid I can be for Mahesh sir. And yes, I had started my journey under commerce with Mahesh sir, Soham sir, Achi ma'am, and definitely Mahesh sir's role has been pivotal in terms of getting me where I am, in terms of getting my basics and getting the basics for the life and future clear at a very base level. So
yes, I would again like to thank Mahesh sir for making my journey very special, making every one of our journey very special, and being truly that uh, marking difference between what someone would have dreamt to be and what someone is after your contribution, sir. We are very privileged to have you as our mentor, and I guess everyone will agree with me and thank once again on behalf of all for all of your contributions in our life. Thank you so much, Mahesh sir. Jyot, Uh, I think Jyot must have talked with Neha madam today regarding that marriage condition. Sir, it was very much evident that it would have been the case. Thank you, Jyot. Thank you so much. Thank you so much, Jyot. Thank you, sir. थैंक यू सो मच ज्योत सर. ओके, मतलब ऑलमोस्ट इमोशनल कर दिया आपने सबको ये चीज डिस्कस करके, ये चीजें बता के. ओके, एंड क्रिकेट की बात करें तो ऑफ कोर्स ओके, अगर जो सबसे पहले अगर स्टेप आउट करेगा ओके फॉर प्लेइंग क्रिकेट, वो होंगे महेश सर. ऑलवेज एंड ऑलवेज. ओके, कहते कि उम्र हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज सबसे तेज वही दौड़ते हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, यस, CA Tanay sir. Okay, please share your experiences with me, sir. Yeah, sure. First of all, a warm regards to everyone, one and all here, and very happy Teachers' Day to all my teachers, Mahesh sir, Soham sir, Archie ma'am, and all the other people who have contribution in my life. I'm thankful to everyone, and happy Teachers' Day to all of you. I also want to thank Balakrishna sir and Hitesh sir for giving me this opportunity on this auspicious day. And yeah, so I'll directly go to some of my experiences. So as Jyot was saying that he would let others play, I was one of that person. I didn't used to play very well. I'm not a good player, but he used to always encourage me. You should go and play cricket, and it has always been a very great mentorship experience with Mahesh. So he always used to tell us that okay, you're becoming a CA, you have to study more. And that is something which always stays in your mind when you have a lot of motivation from a person like Mahesh sir, who already has a lot of focus and determination on what he does. So that always encourages you. He's an inspiration to us, and that's what is making people like us study more and more. So I'm doing my MBA right now after my CA. Also doing CFA. So at all these stages of life, we remember how Mahesh sir has encouraged us. And one very important thing which he has done as a teacher for us is creating a base. So the commerce base has been so strong for us because of all his guidance and teachings, that it has been a very easy path when we go to CA or MBA or CFA, wherever we go. The base has been so strong that it has always helped us, and we cannot ever forget their contributions in our life. That is, it has been scripted in our life. So that is one thing which I want to thank sir for. And yeah, we even sir, I would like to tell you one thing, that the story which Jyot said, that the condition for marriage would be that you'll go to Navlakhi every Sunday. The same story was there in our batch too. So so that is something we all believed. So that is one thing for sure. Terms But and conditions remain same in all batches. Yes, yes. But it was always fun. It was always a fun experience, and even in classes, even while he was he gave us a sum, and if we completed a bit early, then he used to come to us, just talk to us. So the classes were always a blend of teaching where we had to do something perfectly, otherwise he used to tell us that you are not doing this okay. So he always wanted us to improve, but it was jailed with a personal touch where he came, he put a hand on our shoulder and he said that okay, chalo, kab jana hai, ye Sunday cricket khelne jana hai, team banao. So that is something which always stays with you, and which is very great to have in a mentor for any person, I would say.
So I'm very thankful to you for all the experiences and all the bases that you have made for us, which has helped us go further ahead in our life. You have been an inspiration, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, Tanay. Thank you so much. Thank you so much, Tanay sir, for those words. Okay. Yes. Now moving forward to Sri Ruang sir. Okay. Sir, please share your memorable experiences with Mahesh sir. Ruang sir. I think sir is on mute. Monish, you'll have to unmute. Yeah, actually, I'll unmute him. Ruang sir. He doesn't like cricket और इतनी सारी क्रिकेट की बात हो गई ना तो भाग गए. Ruang sir. Okay. Yes, Monish, क्या हुआ? Probably, sir, lights are, there's some power cut there in his office. So due to this reason, might be it is not possible him to teach there. आगे ध्रुवांग सर आगे but on Dhruvam sir- another ID. He's on Yeah, another Dhruvam ID. sir is joining soon. Okay. Dhruvam sir is joining us soon. Yes, Right? he has joined. He has joined. He has some unstable internet connection, so he is joining. Monish, can we go ahead with the other agenda? Yes. Yeah, Dhruvam sir joined, sir. He has Yeah, joined. yeah. Yes. Thank you, sir. Sorry for the uninterrupted connection at my office. Not an issue, sir. Not an issue, sir. Yes, sir. Please share your memorable experiences with Mahesh, sir. Okay, what could be a day better than this Teachers' Day to show our gratitude to our teachers? We always are obliged to our teachers. We always owe to our teachers. And Mahesh sir is one of the teacher or one of the guide, one of the pillar in my life, because I still remember the day when I became a chartered accountant and I went to meet him to show my gratitude on becoming a chartered accountant. On that particular day, he identified the skill which even I don't know about myself. I still remember that sir told me કે ધ્રુવાંગ કેમ તું ભણાવી ના શકે? And instantly after hearing the said words from his mouth, I put a thought on why I can't be an academician, and because of him I became an academician. After becoming an academician, I've got a platform, a big platform, a large platform of ICAI, and became a national faculty on GST. This is all because of what he did for me. This is all because of what he identified in me. What can be learned from Mahesh sir is commitment to the profession. I still remember that he used to come at 5:30 in the morning. I'm talking about 10 years back, when there were no restrictions on the timings, etc., and he used to be there at 5:30, sharply at 5:30 morning, whatever the weather might be, whatever the circumstances might be. What I've learned from him is a passion for the subject. What I've learned from him is the management, the confidence, and how to market yourself. What I've learned is an ethical way of practice, and nothing is impossible. I'm using this word nothing is impossible because in the introductory speech you have already used a word Mr. Perfect, Mr. All-Rounder.
and that is the right word which can be used for him, because considering all these degrees, CA, CS, CMA, MBA, LLB, जो हम सोच भी नहीं सकते वो सर ने कर दिखाया है. So this is what I have learned from him in all these years. So thank you, sir. Thank you This so is much, what- Dhruvam sir. Thank you so much, हाँ. Dhruvam sir. Thank you so much. Thank you so much, Dhruvan sir, for those words, for those kind words. Okay, and yes, Mahesh sir is surely an inspiration for many. Now, एक क्लास में कैसा होता है कि हमेशा कोई स्टूडेंट होता है, वो होमवर्क करके आता है कि स्टूडेंट जब भी कोई टेस्ट देता है, ठीक है, तो वो अपने टीचर से एक्सपेक्ट करता है कि मैं जो आंसर्स बोले वो सही है क्या, मैंने कुछ गलत बोला. तो यहाँ पे या लेट्स आस्क आवर टीचर ऑफ द सेशन, सीए Mahesh Jaiswal sir, that what will be your reviews for their personal experiences with you, sir? You asking to me, Monish? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, I am very much thankful to Balkishan sir. Okay. He called me yesterday about this event, and even Hitesh sir. Hitesh sir is very good, a close friend of mine, Hitesh bhai. This particular platform, this is platform for all professionals from India, and this is very good platform for all chartered accountants and professionals to come forward. But today this platform is not for professionals, but this platform is for students and teachers. And I'm very much happy, not because of myself, but because of these three persons of my life. And I'll put this thing in accounting way. Okay, accounts में दो चीज पे बहुत फोकस किया जाता है. One is sales and second one is profit. Okay, जो बच्चे अभी 11th 12th वाले हैं वो आगे जाएंगे तो समझेंगे कि सेल्स को बोला जाता है टॉप लाइन एंड प्रॉफिट को बोला जाता है बॉटम लाइन. जब मैं इमेज देख रहा था, जो ये इमेज बनाई थी हितेश सर और बालकिशन सर ने, इन दैट इमेज I am at top, and below my pick there are three other picks and even Monish. So normally जब sales बढ़ता है तो we are very happy, but we are more happy when a profit is increasing. And today I am not happy with top line, I am happy with my bottom line. के bottom line के जो चार लोग थे उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमारी सक्सेस से ज्यादा हमारे बच्चे जब बहुत आगे निकलते, जब ये जोत का इंट्रोडक्शन था कि this age 22 23 24 25 he's detecting frauds and manipulation of accounts and finance at global level. He's having cases at global level जहां फ्रॉड होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में. वो ट्रांजैक्शंस को एक 24-25 साल का एक बच्चा वो देख रहा है. ओके, एंड the most important part of his journey is what? He's having only 2 years of experience and he's having that highest level of maturity. He cannot share any details of his work to even his brother, his sister or his father. His father is living chartered accountant in Baroda, but still he doesn't know कि जोत कौन सा केस पे काम कर रहा है, कितना फ्रॉड हुआ है, क्या चेक कर रहा है. And that's not about company's policy. Company's policies होती है, but I am talking about maturity of this person at the age of 20-25, जहाँ एक बच्चा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. सो आई एम वेरी मच हैप्पी. जो मैंने पहले बताया, आई एम हैप्पी अबाउट माय प्रॉफिट. सो जो प्रॉफिट्स मैंने जोत की फीस से अर्न किया था या ध्रुवांग की फीस से अर्न किया था कि तनय की फीस से अर्न किया इन दैट ईयर, उससे बड़ा प्रॉफिट मुझे आज दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑफ टीचर्स डे. When I am talking about Tanay, when he has completed CA and he came to me, and I always tell my students when they are into CA final, I always tell all of them that if you don't have any financial problem, if you still can study further for 2-3 more years, then go for IIM. But CA डिग्री ऐसा है कि जैसे पास होते हैं ना, तो ये बाल किशन सर और ये हितेश अग्रवाल सर इतने अच्छे अच्छे कैंपस प्लेसमेंट सेट करते हैं, तो बच्चों को 15-20 लाख का कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है, बच्चे पढ़ाई छोड़ के जॉब में चले जाते हैं. And Tanay rightly followed all those words and went for IIM. Okay, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है to get MBA from IIM and he is pursuing MBA from IIM. And ये जोत और तनय के लिए और एक चीज है कि दोनों के पास एक रेडी प्लेटफॉर्म था. उनके दोनों के पापा बड़ौदा के लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं,
बट फिर भी उन्होंने वो प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करते हुए अपने आप को एक अलग जगह दिखाने के लिए, Jyot is right now working at Mumbai, Tana is pursuing MBA from IIM, and without using that base, without using that influence of the parents, they are proving themselves. So बहुत बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चे कोई, जब कई बार ऐसे सोसाइटी में बोलते जाते हैं कि आजकल बच्चे बस मम्मी पापा के पैसे देखते हैं, मम्मी पापा का बिजनेस देखते हैं कि मम्मी पापा के बिजनेस पे उनकी नजर होती है. बट व्हेन आई सी स्टूडेंट लाइक दिस टू, आई कैन ऑलवेज से कि अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की वेल्थ और बढ़ाना चाहते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर वेल्थ. ओके, कमिंग टू ध्रुवांग सर. जब ध्रुवांग सर की बात आती है तो एक और नाम जुड़ता है उनके साथ और वो नाम है जीएसटी. ध्रुवांग सर को आईसीआई में सब जीएसटी के नाम से जानते हैं कि जब जीएसटी आया 2017 में, राइट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, is providing trainings to all chartered accountants, even to tax officers, even to GST officers, even to lawyers. He's constantly working on this GST platform. And at this age of around 28-30 years, एक नेशनल स्पीकर बनना, एक नेशनल स्पीकर के टॉप लिस्ट में आना और हर जगह इनविटेशन मिलना कि नहीं हमें ध्रुवांग एज अ स्पीकर चाहिए. सो दैट्स privilege for all of us कि कभी हमें जीएसटी के लिए कुछ समझना है as a teacher, and when we call Dhruvang sir, he is always available. And the best part जो मेरे लिए बोला ज्योत ने और तनय ने, but I can always vouch for this, I can always tell with all respect, this level of achievement, after even this level of achievements, once again there is no attitude towards work. They all are very ground level persons. And the most important, ऐसा कोई achievement नहीं है उनकी लाइफ का कि उन्होंने मेरे से शेयर ना किया हो. ओके, इवन आई रिमेंबर दोज डेज कि ज्योत मुंबई होता है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, कुछ होता है, वो मिलने नहीं आ सकता है, फोन करता है, सर फोन पे मैं आपको पैर छूता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए. सेम वे तनय, whenever he is coming to Baroda, he always talks to us, he always comes to meet us. Same way Dhruvang is a brother to me. इन तीन में से सबसे ज्यादा जर्नी अगर हुई है स्टूडेंट के बाद तो ध्रुवांग के साथ हुई मेरी. सो ये तीनों का जो जर्नी है वो बहुत अच्छा रहा. एंड आई एम प्रिविलेज टू हैव स्टूडेंट्स लाइक ज्योत, तनय एंड ध्रुवांग. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Mahesh sir. Thank you so much. Okay, now coming to the main part of this session, जहाँ मैंने बताया था, now it will be a conversation basically between the speakers and the teachers. ठीक है, तो as I always say that being a student, okay, being a student, आपको एक टीचर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. But can I say within that four walls of that classroom, okay, that's a very common thing. Okay, एक टीचर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनके नॉर्मल छोटे मोटे टेक्निक्स क्या होते हैं, वो सब कुछ हमें पता है. लेकिन वापस से बता रहा हूँ, दिस सेशन इज अबाउट द अनटोल्ड स्टोरीज. सो स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, अभी से पूरा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हो जाएगा. ओके, स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट यू नो, अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं, ओके, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की बात करूं, कि एवरी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हैज एन आइडल. ठीक है, कि अगर किसी को एक्टिंग के फील्ड में जाना है तो उनके लिए अमिताभ बच्चन एक आइडल होगा. ओके, जिनको सिंगिंग के फील्ड में जाना है उनके लिए किशोर कुमार, मोहम्मद रफी विल बी एन आइडल. ओके, तो वैसे ही हर एक स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं उनके एक आइडल्स होते हैं. ओके, और बेसिकली हमारे जैसे के लिए, ओके, हमारे आइडल्स हमारे टीचर्स होते हैं. एंड हम हमेशा हमारे टीचर से कुछ पॉजिटिव चीजें लेना चाहते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है, हमें वो चाहिए होती है, हमें वो उनसे सीखनी होती है, हमें उनसे लेनी होती है. ओके, सो द क्वेश्चन हियर goes like this, and this question is to everyone. Okay, everyone. I'll ask 3 questions. Similar sound करेगा, लेकिन जो twist आएगा वो अंत में आएगा. So the question goes like this: one quality you would like to have from Mahesh sir as a teacher, as a profession, and as a sports person. I'm repeating my question again. One quality you would
like to have from Mahesh sir as a teacher, as a professional, and as a sports person? Yes, again starting with CA Jodh Bakshi sir. Okay, so as a teacher, what I would like to learn from sir is always know the level of the person to whom you're talking and reach to that level so that the other person understands. Let me put it straight into an example. Sir has 5 degrees, has been highly qualified, but his ability to talk to a 11th standard student, that's not something which anyone can have very easily, because that person doesn't know debit and credit, and sir is almost a PhD. So to bring that's something which I would like to learn and inculcate into me, to understand the level of the other person to whom I'm talking to. As a professional, I would like to learn to always be a student, like sir has been a student of various professional courses, and the way he always says that never keep learning, keep pursuing things. So always be a student is what I would like to learn from Mahesh sir as a professional. As a sports person, as I said in my introduction, that to truly love the sport and promote it in a way that even if I am not playing, I am enjoying to that level. So to truly love the sport as a whole and promote it is what I would like to learn from Mahesh sir as a sports person. And I'll take the liberty to add forth that what I said, and I would like to repeat it. As a human being, I would like to learn to stay as grounded as I can, like sir. Thank you so much. Thank you so much, Jodh sir. Thank you so much. Okay, now moving towards CA Tanay Mehta sir. Yes sir. Yeah. One quality you like to have from Mahesh sir. Yeah. So first of all, as a teacher, the thing which I would want from him is kind of the connection which he has with his students. The way he's able to connect to each and every student. Every individual is different. Every student is different, but he somehow finds a way to understand that person and connect to him in the right way, and that helps in both the things, in building personal relations as well. As in, he becomes very approachable to all the students, and at the same time, he knows how to handle or tackle that particular student. Like Jodh said, that he can go to their level and explain the things to them. So that is one thing which in teaching field, which everyone should learn. In the professional field, I would say it's his focus and dedication. He has achieved everything he has wanted, and he has done a lot of work for it as well. He had classes, he did a lot of things together, and that is something which I want to learn from him, that you can achieve all your targets, and you need to work hard for that. So both the things which he has done professionally, that is something which I would like to learn from him. And in sports, I would say his energy on the field is amazing. He loves the sport. He gives 110% on the field when he plays. He gives absolute 110%. He loves playing cricket. He loves to win as well. So the energy which he brings with himself, actually it reaches the other players as well, and that is something which I would love to have on field. So these are the three main things. Well said, Tanay sir. Okay, great. Now, moving towards our next speaker, CA Dhruvang Parikh sir. Yes, sir. One quality you would like to have from Mahesh sir, being a teacher, As far professional sports as person. as far as sports person is concerned, I have seen him playing on the field. What I've seen from him, and what I've learned from him on the ground is the sportsman spirit that he has towards the fellow sports persons. But I always have a complaint with respect to sports as far as sir is concerned, that he has never allowed me to play with him in his team. As far as professional life is concerned, what I've learned from him is the ethical way of practice in the stiff competition. And as far as
a teacher is concerned, as rightly said by Tanay and Jyot, how to connect with the audience. This is what can be learned from him. Okay, thank you so much, Dhruvan Parikh sir. Okay, so basically these were the qualities of Mahesh sir that each and every speaker wants to adopt or wants to inculcate in themselves. Okay, now अब यहाँ से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है. अग्नि परीक्षा इन द सेंस, ठीक है, आपने इतनी सारी बातें कही, ठीक है, आपने आई वुड से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए विद महेश सर. नाउ लेट्स सी हाउ मच डू यू नो हिम. देखते हैं आप महेश सर को कितने हद तक जानते हो. तो कुछ चीजें क्लासरूम के अंदर वाली होगी, कुछ चीजें क्लासरूम की बाहर वाली होगी. ठीक है, देखते हैं कितने सही और कितने गलत जवाब देते हो आप लोग. सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन. सो हाउ मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स महेश सर हैज taught and out of which how many subjects you have studied? I'm repeating my question. How many different subjects Mahesh sir has taught and out of which how many subjects have you studied? Costing. Yes. Statistics. Okay. Can we keep it one by one, please? तो थोड़ा एक गेम हो जाएगी. Yes, Jyot sir. Yeah, starting with you. Okay, so statistics, financial reporting, accounting, and costing. He's also taught some taxation also, as far as I remember. And out of these, I've learned costing, statistics, and accounting from sir. And which was one of your favorite? Statistics. Oh, great. Sir, is he right? Mahesh sir. Yes, he's right. Oh. 100% right. Great, Jyot sir. So nice beginning. Okay, पहली बॉल पे छक्का मार दिया गया है. ठीक है, अब दूसरे बैट्समैन की तरफ चलते हैं. Yes, Tanay sir. Yeah, so as Jyot has already told us subject, so I have learned stats, costing, and FM from him, and a bit of tax, but mainly stats, costing, and FM. These are the three subjects which. Which was one of your favorite? My favorite has been FM. Oh. Yeah, I loved that subject, and he taught it in such a great way. Stats, obviously, stats is different. It has a different place, but FM is something which I've loved over all these years. So I would say FM. He made that subject my favorite. And definitely, we all know that Mahesh is a person of finance, and yes, one of his proficient, I would say, core area is financial management. Great. Now, moving towards the next speaker. Yes, Dhruvan sir. Costing, financial management, indirect taxes, and information technology. Flowchart, particularly the topic of flowchart. And which was your favorite? I guess. Costing. Oh, great. Okay, so yes, Mahesh sir has approved each and every answer, and yes, you have also specified your favorite subjects. That's great. Now, moving towards the next question, I'll ask this specific question to Dhruvan sir. Yes, Dhruvan sir, ready for the question? Yes. Okay, like we all know, okay, आदत एक ऐसी चीज है ना जो कभी जाती नहीं. ठीक है, Right. भले एवरी 6 months सीए का अटेम्प्ट आके चला जाता है, लेकिन आदत जो चीज होती है वो कभी नहीं जाती एक रिस्पेक्टिव इंसान Right. में. ओके, सो ऐसी कौन सी एक महेश सर की आदत थी जो क्लास में वो करते थे? उनके एक रेगुलर बेसिस पे एक आदत हुआ करती थी कि पढ़ाते वक्त वो चीज ऑब्वियस है कि वो चीज होने ही वाला है. एक आदत थी, एक स्पेसिफिक आदत थी. Specific adat, say it's already been 10 years. So not pretty sure about that habit of Mahesh sir. एक वर्ड मुझे याद है उनका, जो ओके बीच में सर कई बार बोलते थे, वो मुझे याद है.
Any doubts? That was one other word which he used to speak. Okay, इतना मुझे okay, याद. okay, okay. Not an issue, sir. Now, yes, Jyot, sir, can you try, please? One specific There habit. was one specific action which every one of us can relate, be it for hi, be it for bye, be it for asking any doubts. It is this. This is how, this is the haptics that sir uses. Any doubts or hi, bye, as in if he's in the car wearing that black goggles and he'll be like bye, he'll be like hi. So that's very unique about sir. Okay, okay, great. Tanay, sir, you like to try? I remember the no doubts thing, and he always does this. That is for sure. That everyone remembers that. I remember no doubts. Any doubts? Any doubts? Okay, so yes, individual basis पे आप अपने experiences से सही हो, लेकिन one habit which Mahesh sir still has while taking a lecture is playing with a pen or playing with the chalk which he has in his hand. जब भी lecture होगा तो तभी भी कहीं ना कहीं whenever if we are taking notes for the same, he'll always his pen will be continuously moving in his hand. That is one habit which it is still existed, which is still there in you right now. Okay, okay, not an issue. फिर भी मैं तो सही बोलूंगा, गलत है नहीं. आप अपने साइड से आपके सबके एक्सपीरियंसेस सही है अपने पर्सनल लेवल से. Now, next question. Okay, I'll keep it open. ठीक है, जिसको आंसर आते वो बोलेंगे. ट्रेडिशनल्स की बात करो कि ट्रेडिशनल कपड़ों की बात करो. एवरीवन वांट्स के हम ट्रेडिशनल कपड़े पहने, और हम पहनते कब है? स्पेसिफिकली कोई ओकेजन पे, कोई एक ओकेजन हो, घर में शादी हो, फेस्टिवल हो, तो हम हमेशा से ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं. ठीक है, अच्छा फील करने के लिए नहीं, कभी कभार इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फोटोज रखने के लिए. लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है दैट महेश सर इज नॉट दैट टोटली अटैच्ड टू सोशल मीडिया. लेकिन एक आई वुड से एक उनका क्या बोलते हैं, टाइम, एक रिस्पेक्टिव डे होता था पूरे वीक में. ठीक है, कि वो हर हफ्ते एक रिस्पेक्टिव दिन को ट्रेडिशनल पहन के आते. वो That was Sunday. 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 संडे. संडे. तनय सर संडे. Sunday. महेश सर Saturday. Oh, But I guess from Jyoth and Tanay, I guess they were not students at that time. I guess Dhruvang was student, because once I start having those school lectures and concept school lectures, I stopped wearing those kurtas on Saturdays. Okay, because I used to go in that compulsory informal. So Saturday पहले था, फिर वो I guess 2010-11 के बाद बंद हो गया. तो 2010 तक या it was trend. Every Saturday I used to wear traditional. ओके, क्लोज. एक दिन ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत नहीं है उसमें. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चन होगा कि मैं हर एक स्पीकर को इंडिविजुअल बेस पे पूछूंगा. नाउ माय क्वेश्चन गोज लाइक दिस. ओके, एवरीवन रिमेंबर्स द फर्स्ट. ओके, चाहे वो कोई भी जगह पे हो, कोई भी सिचुएशन पे हो, everyone knows who was the first person who landed on moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. बट किसी को पता है कि दूसरा कौन था? अब ये मत बताना कि सर हाँ 3 इडियट्स हमने देख लिया है ऑलरेडी, और 3 इडियट्स देखने के बाद वायरस ने बोला था ना कि नो वन रिमेंबर्स द सेकंड, तो हम रिसर्च करके आए अपने साइड से. ठीक है, सो अंडरस्टैंड. अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलूं, आपको सिर्फ यही पता है कि पहला कौन. तो माय क्वेश्चन गोज लाइक दिस. आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद महेश सर, the very first interaction with Mahesh sir, starting with Jyot sir. my first interaction was very formal, and I looked up to sir. I mean, that gradually turned into a more elder brother type relation with sir. Sir used to always treat us that way, make all of his students friends. But the first interaction was in the classroom only, as a formal introduction with sir.
Okay, great. Tanay sir. Yeah, so my first interaction was formal, but then when I went out, he actually he somehow knew my father. So he kind of he recalled that, and he asked me that, okay, he just told me how he knows my father, and that's how the conversation started at that point of time. So Finish first was in the class, obviously, because uh, I took admission somewhere else where he was not there. But then that incident happened. So he connected. We had a conversation in the very first meet outside the class. Okay, great. Great sir. Yes, Dhruvan sir. I think uh, I joined in between, so the batch was already started, and I just jumped into the class. I just started my class, and he asked me a question whether I'm in the right class or not. That was my formal introduction or my formal talk with myself for the first time. Okay, okay, great. Everyone has their own first interactions with Mahesh, and everyone has initial stages stuff, but obviously a very formal interaction. But later on, yes, we gel with each other, and yes, today what we are. Now, next question. Okay, again individual basis पे मुझे individual speakers से answer चाहिए. Any funny incident from your time in the class? आपके साथ हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी और के साथ हुआ हो, जिसमें पूरा क्लास हंसा हो. Okay, any funny incident which happened in the class? Dude, sir. I I can remember of one thing. Probably Vaishvik was also there with us. There was one guy. I'll not name it, but there was one guy who had left the class because of the mischief that few of us were doing. And then sir had, yani we all had laughed, but sir had in that laughter also uh, taught us a lesson how to be with everyone, and such an incident should not happen. But that was a very funny incident in a way that it happened, but then it was handled that way by sir. Okay. Okay, okay. Yes, Tanay, sir. Any funny incident which happened? Trying to remember, there have been a lot of great incidents, but I don't remember any specific funny incidents for some reason. The incidents which I remember would be, he would when he would go out of the class, we would do a lot of mischief, and then he would come inside the class. Then we would complete our sounds a bit early, and then we used to talk, and we used to make a lot of noise. He used to come back that bhai kya hai? And then also he then made it a little. He eased that particular musti which we used to do, and then he used to start again with his lecture. So those are very light but very enjoyable moments in his class. Great, great, sir. Yes, Dhruvan, sir. Any funny incident from your time? I still remember a day when a student was sleeping in the class, the ongoing class, and sir went to him and Satya Ubarig and said, so the guy was shocked and surprised. So the whole class was laughing at that point of time. Okay. So basically, he was sleeping in the class. Okay, okay. I got it. I got it point very clearly. Okay. Uh, thank you, everyone. Okay, that was a very great session with you all. Okay, thank you so much for your answers. Now, थोड़ा हम angle बदल लेते हैं. Now, my next question will be to CA Hitesh Agrawal, sir. Yes, sir. Yeah. Please, sir, share your experiences. Okay. We all know that talking about the relation which you and Mahesh sir have on the field, off the field. Okay. In the class, outside the class, in the institute, in the institute, outside the institute. So, Sorry, hello. Monish, could you repeat? Monish, could you repeat the Yes, yes, question? yes, sir, yes, sir. Yeah, basically, we all know that you have that cordial relation with Mahesh sir on the field, of the field. Okay, in the class, outside the class, in the institute, outside the institute. Okay, so please share your experiences. Just share about the bond which you have with Mahesh sir.
Yeah, Monish, the bond started with the cricket only. My sir can tell the exact incidents that I don't remember right now, but our bond started with the cricket. And let me tell you all the guys, Monish, you have asked the two questions, the first two questions regarding the professional as well as the other things about the Mahesh sir, right? Two good Yes. things about the Mahesh sir. Yes, sir. So let me tell you on field, everyone, right? To every player, whether that player has played in past for the branch, for the institute. So he has come up with the idea. He has come up with the idea we should give a respect to all the seniors who have played for the branch at least once. So, as you are aware that we are organizing that Chartered Accountant Premier League in Baroda since last 6 to 7 years, right? And in that Chartered Accountant Premier League, he has come up with the idea that we should make compulsory for all the teams to accommodate at least one senior player, and we have formed basically a rules to give chance to those senior players. So this is the one thing, that the respect that he gives to every players, even the seniors, and the special rules are made at that time. Branch is following in the CAPL. He has given this is what my memory tells me to tell something about the Mahesh sir. One more thing, I would like to cherish the moments that we have shared together, like whenever there are more players, especially the match against the Ahmedabad. There are because it बहुत ही रसाकसी वाली मैच होती है कि बड़ौदा को जीतना है, कंपलसरी जीतना है. It's like Right? India Pakistan. It's like India Pakistan. Yeah, it's like India Pakistan. Right. So whenever there are players more than the required, that is more than 11, you always say I won't play. હું બાજુમાં બેસી જઈશ, હું નહીં રમું. Right? So at that time I feel bad. Okay, Mahesh sir, you should play. You are all-rounder player and team needs you. Even though we always taking more time to convince the India-Pakistan like match and this match. So this is a one more thing that there is a one more memory that I share with the Mahesh sir. One more thing, when when we make him as a captain of the team, right? And we won the match against the Ahmedabad. That is the 2 times since last 4 years, if my memory goes right, Mahesh sir? Yes, So sir. in that match, when we won 2 times and we are going to pick that winner's trophy, right? He always says me, કે હિતેશભાઈ તમે જાઓ ટ્રોફી લેવા માટે, હું નહીં જાઉં. So he is always leading from the behind. This is what the great example that we can see as a human being, as a true leader. Thank you so much, Hitesh, sir, for those words. Thank you so much. Yes. Okay. Now we had a session with the speakers. Okay, quite a big session with the speakers जहाँ पे कहने के आपने अपने personal experiences और एक छोटा सा question answer round हमने किया. Okay, now let's do a question answer round with the teacher of the session. Okay, so talking about the next round is going to be the rapid fire round. And rapid fire round में जो सारे सवालों के जवाब देगा वो होंगे महेश सर, आर टीचर ऑफ द सेशन. लेकिन एक ट्विस्ट के साथ. कैसा ट्विस्ट? ओके, आई वुड रिक्वेस्ट ज्योत, तनय सर and Dhruvam sir to please take out a page and a pen, please. Take out a page and a pen, please. Okay, so the rules go in this manner. इतने सालों तक कहीं ना कहीं आपने जिसके गाइडेंस के अंदर
एजुकेशन प्राप्त किया, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर एक लेवल पे गाइड किया, जिन्होंने आपको हर एक लेवल पे असेस किया, अब आपकी बारी है उनको असेस करने की. ओके, नाउ द रोल्स आर टेक्निकली रिवर्स इन दिस गेम, जहां पे कहीं ना कहीं जवाब महेश सर देंगे और आपको अपने व्यू पॉइंट से उसको सही या गलत प्रूव करना. Okay, each question carries 1 mark. I know exam paper वाली feeling आ रही है definitely. Like each question carries 1 mark. Okay, अगर सही हुआ तो पूरा 1 मार्क और गलत हुआ तो स्टेप्स के कोई मार्क्स वैसे मिलते हैं नहीं, तो 0. ठीक है? So, okay, let's start with our question and answer round. Imposition, Monish. Yes, sir, Monish, yes, sir. imposition क्या है? Imposition. Okay, yes. Yes, अभी obviously because एक टाइम पे जब महेश सर का होमवर्क नहीं करते तो इम्पोजिशन तो मिलता था. अब चलो, अब थोड़ा as I said the roles are reversed, तो everyone who is present over here, okay, कहीं ना कहीं सारे बच्चे मौजूद है, तो अगर यहाँ पे महेश सर 50% of the answers नहीं दे पाए, कितने 50% of the answers नहीं दे पाए as per the assessment of the speakers, अगर speakers ने बोला कि 50% से कम आएगा, जैसे because the CA students are very much admired with that 50%, बहुत लगाव होता है वो 50% से, बहुत वैल्यू होती है 50% की being a CA student. So basically अगर 50% से कम आया तो महेश सर कमिट करेंगे कि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड को कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा. The commitment goes like this, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा. ठीक है, वो आपके हाथ में है द स्पीकर्स, कि आपको अगर चाहिए कि बच्चों को होमवर्क करवाना है तो आप उस तरह से मार्किंग कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हो. ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली, हर एक आंसर पे फोकस करना. ठीक है, इधर हमें डिबेट नहीं करना है, इट इज जस्ट अ रैपिड फायर राउंड. ओके, जिसका इंपोजिशन ये होगा. So, yes, sir. I am audible now. Yes, sir. Absolutely, sir. Absolutely. मुझे ऐसा लग रहा है यार, आप तो बहुत हार्श हो रहे हो यहाँ पे, बहुत हाई फाई रूल्स रेगुलेशन बना दिए आपने आज. ऐसा लग रहा है महेश सर को भी ऐसा लग रहा होगा, हितेश सर को भी, बाकी हमारे स्पीकर्स को भी, कि आज मोनीश को पूरी पावर दे दी है. तो काफी, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, थोड़े लिबरल रहना आप प्लीज. मुझे बोलने का चांस ही नहीं दे रहा है मोनीश सर. यस, प्लीज कंटिन्यू यार. ओके सर. बेसिकली देखिए, आज टीचर्स डे है. ठीक है, हम इतने सालों से हमने महेश सर की सुनी है, बट हमें पता जब महेश सर स्पीच देते हैं तो इट क्रॉसेस 1 आवर वेरी इजीली. ओके, पता भी नहीं चलता समय का और 1 घंटा निकल जाता है. तो आज हम जितना पूछेंगे सर उतना ही बोलने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सवाल तो मेरे पास है. ओके, सो यस, स्टार्टिंग विद द रैपिड फायर राउंड सर. ओके, आपका भी मोनी 1.25 घंटे से ज्यादा निकल चुका, आपको पता नहीं चला होगा. Yes, please. Yes. Okay. So the question starts like this. हम सबको पता है that politics from the year 1947, जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, एक हॉट टॉपिक रहा है तब से. ठीक है, तो चलो पहला सवाल जो करता हूँ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग करता हूँ महेश सर को. यस महेश सर. Yes, Monik. Will you join politics? Never. सर मतलब अभी की बात नहीं करो, यहाँ से 10-15 साल के बाद. अरे पूरी लाइफ ज्वाइन. पूरी लाइफ ज्वाइन. Sir, let's assume. Okay, being a commerce students and we have studied economics also, so let's assume. Okay, कि कहीं ना कहीं आपने politics join कर लिया, assumption के बेस पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप एजुकेशन मिनिस्टर बनोगे या फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे. अरे ज्वाइन ही नहीं करना है पॉलिटिक्स तो क्यों है मिनिस्ट्री. सर assumption सर इकोनॉमिक्स में कहाँ एप्लीकेबल है, वो सिर्फ एक assumption पे किया जाता है. तो assumption का आंसर दे रहा हूँ. I'll prefer education ministry. Okay sir, but technically जैसे हमें पता है you are a man of finance, you are a person of finance, still education minister. So I'll improve education so there will be more persons in finance. Oh. Okay, so yes, of course, मैंने भी कहने की बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्ट किया था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, इंडिया का या फॉरेन कंट्री? Obviously इंडिया का. मेरा भारत महान.
ये सितारे हमारे सामने सितारे हैं देख इंडिया के, तो क्यों बाहर जाना ही क्यों है? ओके सर, तो बेसिकली आपने जैसा कहा आपको ज्यादा बेहतर लगता है इंडियन सिस्टम, ठीक है? Yes. तो इंडियन सिस्टम में भी ऑप्शन, आप कौन सा प्रेफर करोगे, सेमेस्टर सिस्टम या ईयरली बेस्ड सिस्टम? मेरा क्लास बंद करवाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। नो कमेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। तूने कोई न्यूज चैनल के साथ टाइप किया है क्या? नहीं सर, वैसे तो only the SC plus students wants to know, but that's it. No comments for this question. I'm sorry. Yeah. Okay, sir. Not an issue. Okay, moving towards the next. Okay, if student misses the class for any genuine reason, ठीक है, for any genuine reason, तो आप उसे क्या दोगे? मैं तो ये बोले ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसे जाने दोगे या फिर माफ कर दोगे, वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कोई भी लेक्चर मिस करता है फॉर अ जेन्युइन रीजन, तो नंबर 1 नो पनिशमेंट, ठीक है, चलो। बी इम्पोजिशन, क्लास वर्क और होमवर्क सम्स 5 टाइम्स। थर्ड ऑप्शन पेरेंट्स को कॉल कर लो, और चौथा ऑप्शन क्लास से बाहर निकाल लो। सी, पहले पेरेंट्स को कॉल करने का, जेन्युइन रीजन चेक करने का, अगर जेन्युइन है तो उसको उस दिन का सिर्फ क्लास वर्क और होमवर्क, नो इम्पोजिशन, बट उस दिन का क्लास वर्क होमवर्क करना पड़ेगा। मतलब सर बेसिकली टेक्निकली 2 पॉइंट्स आप भी कवर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही सेम चीज हुआ बट विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, लगता है 4 ऑप्शन नहीं 3 ऑप्शन आ जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है। नहीं, क्लास से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन 5 बार क्लास वर्क होमवर्क उसको इम्पोजिशन मिलेगा। अच्छा, 5 बार क्लास वर्क होमवर्क, 5 टाइम्स क्लास वर्क होमवर्क। ओके, होपफुली एवरी स्टूडेंट इज लिसनिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है? तो प्लीज उस हिसाब से बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन फॉर महेश सर, ठीक है? उन्होंने इतने सारे डिग्रीज प्राप्त किए और हर एक लेवल के एग्जामिनेशन दिया है। मेरे ख्याल से ये जो सवाल है उनको सीए फाइनल के टेस्ट पेपर से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा। नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, हमें पता है सर कि आपको टीचिंग के प्रति कितना पैशन है, ठीक है? हमें ये भी पता है कि आपको क्रिकेट के प्रति कितना पैशन है। हमें ये तो पता चल गया कि आपको दोनों की तरफ पैशन है, लेकिन अगर आपको आपका प्रोफेशन बनाना है जिसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, क्रिकेट या टीचिंग? For passion, I'll balance out, but priority is always teaching. Okay, so basically आपकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा टीचिंग होगी, हमेशा टीचिंग। Yes. Teaching is my priority, but passion के लिए I'll balance out both. Okay, ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर, फॉर वापस से वो अजम्पशन वाला फैक्टर लेके आते हैं। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, अज्यूम तो हर एक लेवल पे करने वाले हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पे वापस हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे यू प्रिफर्ड क्रिकेट, ठीक है? यहाँ पे आपने क्रिकेट को एज अ पैशन भी रखा है, आपने एज अ प्रोफेशन भी रखा है। तो ये बहुत ही एक लेम सवाल लगेगा आपको, लेकिन यस, आप कौन सी टीम से खेलना चाहोगे? विच विल बी योर फेवरेट टीम टू प्ले फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट में? Obviously India. कोई चांस मिलेगा नहीं, मुझे कोई चांस मिलेगा नहीं, लेकिन मिलेगा तो ऑब्वियसली इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन, सेकंड बेस्ट इंटरनेशनल टीम। कौन सी? सेकंड बेस्ट इंटरनेशनल टीम। यस सर, यस। इट शुड बी न्यूजीलैंड। ओहो, यू विल पे फॉर द कीवीज। ओके, ग्रेट। ओके, वापस से थोड़ा ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल आ रहा है। इफ यू विल गेट चांस टू प्ले फॉर इंडिया, मतलब आप कैंप्स में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आपको इंडियन टीम में जगह मिल गई टॉप 11 में, देन विल यू लीव टीचिंग? यस। ये गूगली था मेरे ख्याल से, ठीक है? क्रिकेट की बातें करें तो गूगली तो बनता ही है। ओके, ओके, सो if it is Indian team, then yes. Okay, and still BCCI will allow me, then I'll do teaching also. ओके, नेक्स्ट, चलो आप इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए, ठीक है? अब बैटिंग की बात है, हमें पता है कि हाँ, आप तो हर एक एस्पेक्ट में क्रिकेट में बहुत ही प्रोफिशिएंट हो, वो उसकी तो बात ही करना नहीं है। लेकिन चलो अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करो, ठीक है, विच विल बी योर मोस्ट प्रेफर्ड बैटिंग ऑर्डर? 3, 4 और 5 या ओपनिंग?
It should be 3. Oh, 3. Next Virat Kohli. Okay, great sir. बढ़िया है. Okay. So this was basically okay. This was the questions on the basis के कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात चल रही तो क्रिकेट के ऊपर कुछ सवाल मैंने कर दिए. Okay. अब कुछ 2 ऐसे पर्सनल सवाल जो मैं करना चाहूंगा. ठीक है. पर्सनल सवाल in the sense my next question will be love marriage or arranged marriage? Arranged marriage. Okay. Great. CS स्टूडेंट को लव करने का टाइम नहीं मिलता है, मैरिज के बाद ही लव करते हैं. लेकिन है साथ में जो विंडो में बैठे हुए हैं ना, मेरे 2 करीब लोग हैं, एक हितेश भाई और एक सोम सर. ये दोनों ने प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है, हम लव मैरिज से भी अच्छी लाइफ जीते हैं. Okay sir, okay. And next, joint family or single family? Joint family. You मतलब ये आपका व्यू पॉइंट है that you will be staying in a joint family. Yes. Oh, great. That will teach you so many things. Yes, definitely sir, 100%. Agree, totally agree to it. Okay, अब इतने सारे सवाल सर से किए, बेचारे स्पीकर्स देख रहे थे, स्पीकर्स सुन रहे थे. अब चलो कुछ सवाल स्पीकर से भी करता हूँ. ठीक है, लेकिन इसमें चलो एक थोड़ा बेनिफिट दे देता हूँ. मैं ऑप्शंस दूंगा. स्कोर तो बता दो मेरा, स्कोर कितना हुआ, पास हुआ या नहीं हुआ? Okay, every 100%. Oh my God. Yes, Tanay sir. 100%, absolutely. Dhruvam sir. 10% तो कैपेज करे ध्रुवम, 10% तो कैपेज जैसे ध्रुवम. Okay, so मतलब बच्चों we are really sorry for that. ठीक है कि जैसा हमने आपको कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वैसे भी ठीक है, ये तो सिर्फ बोलने की बात थी. सच्ची में थोड़ी होमवर्क हम लोग कैंसिल करने वाले हैं. कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, तो होमवर्क तो मिलेगा, भले 50% से नीचे आता है, होमवर्क तो मिलने ही वाला है. ये चीज अपने दिमाग में डाल. ओके, नाउ ठीक है, आपने स्कोर बता दिया, बहुत बढ़िया है. चलो अब आपसे सवाल करता हूँ, स्पीकर्स की बात करूँ, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है, ऑप्शन दूंगा. ठीक है, तो ऑप्शन से और ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने को. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स. ओके, ओपन है, it is open for the speakers. CAPL. Okay, CAPL 2020, Chartered Accountants Premier League 2020. महेश सर को टूर्नामेंट के एंड में कौन सा अवार्ड मिला? Let me complete the options. Best batsman, bowler, fielder or all-rounder. बॉलर. Dhruvam sir, bowler बोल रहे. Okay, Tanay sir. All-rounder. Okay, Jyot sir. I am also guessing all-rounder. Yes, Mahesh sir. What's the correct answer? It was player of the series, all-rounder. All-rounder, yes, all-rounder. Great. चलो, तो पहला हुआ सही. ध्रुवम का रॉन्ग है सवाल, आंसर रॉन्ग है. Okay, next question. Okay, ये बहुत ही एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है. हमें पता है 2013 में महेश सर ने शादी की थी. ठीक है, नाउ एक्सेप्ट महेश सर, उनकी शादी है, वो तो प्रेजेंट होने ही वाला है. ठीक है, एक्सेप्ट महेश सर, V4 मी, ज्योत सर, तनय सर और ध्रुवम सर, हम चारों में से कितने लोग वो शादी में प्रेजेंट थे? ऑप्शन A 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4. 4 ध्रुवम सर. 3. सर मतलब ये आपने जो सबसे ऑब्वियस आंसर नहीं है वो वाला बोला था ना? नहीं. Because see, Jyot was present, I was present. Yes. I don't know about Tanay, so I guessed 3. सर मतलब आपने मतलब वो भी थे, मैं नहीं था. ठीक है, सो वो 3 सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आपने थोड़ा पर्सनल रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी गलती कर दी. कोई दिक्कत नहीं सर, इट वाज 3. द करेक्ट आंसर गोस टू 3. ओके, सो कवर अप कर लिया ध्रुवम सर ने. ओके, बट आंसर गलत है ध्रुवम सर का. नंबर इज 3, but Jyot was present, Tanay was present and Dhruvam was present. You were not present.
yes, yes. वही वही बोल रहा हूँ ना sir, that I was not present. Because you become student after 2013. Okay. Now next question. Talking about the professional degrees which Mahesh sir possesses, CA, CS and CMA. ठीक है. कौन सी डिग्री सर ने सबसे पहले CA, CS या CMA? CS पहला क्या? CMA पहला क्या? ध्रुवम सर CMA. Okay. Jyot sir. I frankly have no idea, but I guess CS because Okay. I know CA was not, but CS. Yes. Okay. Tanay sir. I'll go with Dhruvang sir, CMA. मतलब ध्रुवांग सर का इतना कॉन्फिडेंस देख के we cannot go against his answer, and yes, it is absolutely right. The correct answer is CMA. The first degree which Mahesh sir possessed was CMA. वापस से ध्रुवांग सर बैक टू बैक 4 मार दिया आपने. अब ये जो आखिरी वाला सवाल है, ठीक, आई डोंट नो ये आपको पता होगा कि नहीं. Mahesh sir, in his entire career of academics, being a student, okay, उनका एक ही बार एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है 100/100. आई एम अगेन रिपीटिंग इट वंस अगेन. सर के पूरे स्टूडेंट करियर में, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, उनके पूरे करियर में सिर्फ एक ही बार और एक ही सब्जेक्ट में उनके 100 में से 100 आए. वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैं ऑप्शंस देता हूँ बिकॉज ये बहुत ही एक वाइड ओपन क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं. नाउ द सब्जेक्ट्स गोज लाइक दिस. अकाउंट्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी लेवल का हो सकता है, ठीक है. 11th 12th सीए, चलो सीए में 100 आना तो मुश्किल है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन फिर भी 11th 12th की मैं बात करूँ, बीकॉम की बात करूँ, ठीक है, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, एफएम एंड कॉस्टिंग एंड मैथ्स. Maths, I feel. Maths. Might be statistics. Okay, Dhruvang says going for statistics. Okay. Jyot sir? Maths. Okay. And Tanay sir? Maths. मतलब सर ये किस बेसिस पे अनुमान लगाया आपने? गूगली डाल रहे हैं, उस बेसिस पे आपने अनुमान लगाया? तो वैसे लग रहा है, should be math. Gut feeling. Yeah. पर फिर मैथ्स होता तो सर ने कॉमर्स क्यों लिया? फिर साइंस ही कर लेते सर. वो वाली भी थॉट प्रोसेस नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 100 आए मैथ्स से, मतलब मैथ्स में 100 इज अ वेरी बिग थिंग, ओके, फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो वो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं आया? Not necessarily so, but yeah, gut. Maths. Tanisha, maths. Still maths. Okay. The answer, statistics. So the answer is yes. In 10th standard, he scored 100 marks in maths. Oh. In his entire student career, एक ही बार in 10th standard, the irony is being a commerce student, he scored 100 in maths. Okay, so yes, these were the googlies from my side. Okay, so yes, आपने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया, आपने सबने बहुत ही अच्छे से अपने जवाब दिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन वेरी मच इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट बालकृष्ण सर, ओके, फॉर हिज क्लोजिंग रिमार्क्स. तो थैंक यू वेरी मच मोनिश. और ऐसा लग रहा था आप तो खो ही गए थे होस्ट करते करते. आपने बहुत पेनल्टी प्रोविजन डाले थे सभी के ऊपर, तो मैं तो हितेश से यही कहूंगा कि कुछ पेनल्टी प्रोविजन मोनिश के ऊपर भी होने चाहिए. इनको हमने 1 से सवा घंटे का टाइम दिया था और 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है आई थिंक सभी को, कि ऐसे लग रहा है कि सेशन और भी 10-15 मिनट चले तो अच्छा है. बट ठीक है, सभी कुछ, हर किसी की कोई ना कोई लिमिटेशन है. तो थैंक यू वेरी मच. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच महेश सर जो आए हमारे बीच में, एंड हितेश भाई जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया. और 365 डेज जो टीचर है वो हर स्टूडेंट की लाइफ में इतना कंट्रीब्यूट करता है. और एक पिक्चर तो जो है स्टूडेंट को दिखती है, जो फ्रंट में दिखता है, लेकिन उसके पीछे भी इतनी मेहनत होती है टीचर की. तो सभी, हमारी टीम का यही था कि एक दिन हम उनको सेलिब्रेट करें
और हम सभी स्टूडेंट जो पीछे 10, 15, 20 सालों में उनसे पढ़े हैं, जो भी आना चाहे और उनके दिल में जो भी उनके प्रति भावनाएं हैं वो व्यक्त करें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया। और टीचर और एक सड़क में बड़ी समानता होती है कि जो ये दोनों जहाँ है हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन इनके कांटेक्ट में जो भी आता है उन सभी को ये अपनी मंजिलों तक जरूर पहुंचाते हैं। तो महेश सर वैसा ही काम कर रहे हैं कि इनके कांटेक्ट में जो भी आते हैं, तो आज हमारे जो तीनों स्पीकर है, ज्योत है, तनय है या फिर ध्रुवांक है, ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हितेश भाई है, और कहते हैं कि दवाई पीने में कड़वी लगती है लेकिन कई रोगों को दूर करती है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे टीचर की या महेश सर हो सकता है कभी डांट भी देते हो, फटकार भी देते हो, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनके फ्यूचर को संवारने के लिए। तो कभी भी उसको हम अदरवाइज ना ले। और गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, फादर के द्वारा डांटा हुआ जो सन है, और सुनार के द्वारा पीटा हुआ जो सोना, वही असली में जो है आभूषण बनता है। तो वही आभूषण बनाने का काम जो है महेश सर कर रहे हैं। तो सीखना और सिखाना या नो डाउट एक टीचर की कोशिश होती है, और हर स्टूडेंट कामयाब हो, सक्सेस हो, ये हर टीचर की ख्वाहिश होती है। और कामयाब होने के बाद चाहे वो स्टूडेंट वो याद उन्हें करे या ना करे, लेकिन एक टीचर को अपने हर स्टूडेंट को याद रखना उनकी आदत होती है। तो उसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए, हो सकता है सर से कोई 10 साल पहले पढ़ा हो, 15 साल, लेकिन अगर 365 डेज में टीचर्स डे या किसी भी एक दिन अगर वो स्टूडेंट कहीं भी हो, अगर वो मैसेज कर दे या कॉल कर दे, तो जो खुशी होती है उस खुशी की एक अलग ही है। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, स्टूडेंट्स है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी लाइफ में जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, आपके मदर फादर टीचर्स का, तो एक दिन साल में जरूर उस टाइम उनको मैसेज या फोन जरूर करें और उसको जरूर रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि जब एक स्टूडेंट टीचर के कांटेक्ट में आता है तो वो दूध की तरह होता है, मिल्क की तरह होता है, जिसकी वैल्यू नॉर्मल होती है। और टीचर उसके पोटेंशियल को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए उसको कन्वर्ट करता है दही में, दूध में, मक्खन में, छाछ में, और उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा देता है। तो जो हमें वैल्यू एडिशन होता है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं टीचर्स डे की, या कोई भी दिन की हम उनको रिकॉग्नाइज कर सके। और लोग कहते हैं कि पैसा रखो, पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन अगर हम अच्छी नॉलेज लेते हैं, अच्छी योग्यता लेते हैं और अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, अच्छे टीचर्स की संगत में रहते हैं, तो मेरा ये मानना शायद बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। तो deep gratitude to our teachers Mahesh sir and all the, so thank you very much to all of you for giving me opportunity and associated with that event, and very thankful to Pradeep ji Agrawal, Hitesh Agrawal and Rahul Agrawal also, and Mohnish, आपने बहुत जबरदस्त जो है होस्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई 5 मिनट, लेकिन उसके बाद तो थैंक यू वेरी मच, एंड सॉरी फॉर कुछ मैंने नए लैपटॉप से एक्चुअली कनेक्ट किया था, एक सेशन और चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा साउंड का डिस्टर्बेंस। नॉट एन इशू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैंड ओवर टू मोनिश। ओके, सो बेसिकली यस, अब हमेशा हमारे टीचर्स ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो एक छोटा सा सरप्राइज उनके लिए तो बनता ही है। So yes, there is a small surprise for you, Mahesh sir, waiting in that next room. Okay, there is that one small surprise for you, Mahesh sir. Okay. कोई आया है यार, नीचे तो कोई आया है, कब का कोई आया है, तूने भेजा है? आप प्लीज आप जाइए सर, प्लीज देख लीजिए। ओके, तो okay, he'll be back in 2 to 3 minutes. तब तक और एक टोकन ऑफ लव भी हमने प्रिपेयर किया सर के लिए, मोनिश, तो yes, ये भी हम देना चाहेंगे सर को। अभी उनको ही ये जी सर। एंड हितेश जी, यस हितेश सर, क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे एक्स चेयरमैन ऑफ बड़ौदा ब्रांच एंड माय डियर फ्रेंड। यस, हितेश भाई ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, हमारी तो जस्ट बात हुई, हितेश भाई बोला आई विल मैनेज ऑल द थिंग्स, पूरा प्रोग्राम। Yes sir, sorry to interrupt sir, like Mahesh sir is there cutting the cake. हाँ, दूसरे उसमें है। Yes, on Rahul Raj Nayak's sir's video.
Yeah, happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day, sir. सर को अनम्यूट करना पड़ेगा. Rahul sir, can you please unmute the mic? Rahul sir. Okay. सर अपने एक्चुअल व्हाट वी कैन से वहां से आ रहे हैं. एक्चुअल लॉगिन से. Yes, yes. Thank you so much for surprise. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Thank you, thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सर जब तक मुंह मीठा नहीं हो तब तक वो अधूरा रहता है, तो मुंह मीठा करवाने के लिए and sir, one token of love from all your students के लिए. Oh, thank you so much, sir. Thank you so much. And we will arrange to send shortly, sir. Yeah. Thank you, sir. Yes, Monish. Okay. So thank you so much, Balakrishna sir. Thank you so much for giving your closing remarks, sir, for those kind words. Yes, I would request Mahesh sir, okay, that ये इतने auspicious day पे, ठीक है, especially Teachers Day पे, क्या आपका कोई message है for the students and also for the junior teachers like us? First of all, thank you so much. Normally in this pandemic situation, स्टूडेंट से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आज इतने सारे स्टूडेंट को, इवन पास स्टूडेंट को स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगा है. Okay, regularly we take lectures, but on this Teachers Day, almost जो बालकिशन सर बता रहे हैं, 1.5-2 घंटे में मुझे hardly 5 से 10 मिनट बोलने का मौका मिला है. So it was a good thing from your side कि आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया. Even speakers were too good regarding those question answer session. Especially to all students that on this Teachers Day, almost हम हर बार यही बोलते हैं, academics की बात करते हैं, but I am not talking about anything of academics. Okay, I always say that work hard. On this pandemic situation also we are having this session, but this technological change, they had given so many things to us, and today we can say that my students are really proud, and even their parents particularly. And on this day I'll tell all students that I'll wait for more and more speakers on every Teachers Day like Jyot, Tanay and Dhruwang. So it's proud moment for any teacher कि जब वो बच्चे आगे होते जाए और एक दिन वही स्पीकर बने, वही गेस्ट बने, वही किसी और के लिए टीचर बने और आगे मैसेज पास ऑन हो. And that's the objective after getting that monetary returns. So you all are great assets to me, and I want these assets more and more in coming years. So to all my students, all the very best, work hard, and 2022, 23, 24, 25, every year I want speakers like Jyot, Tanay and Dhruwang. To junior teachers, I would say in this advanced technology, when it comes to coaching institute, there are so many things attached with it. The best infrastructure, AC classroom, a good bench, a digital board, everything. But the basic thing that any teacher requires is वो एक नियत होनी चाहिए, एक स्टूडेंट्स को आपके लिए ट्रस्ट होना चाहिए. वो होगा तो ये सारी चीजें irrelevant है, whether you are going with that AC classroom or digital classroom or anything. अगर आपकी नियत सही है, अगर स्टूडेंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं तो आपको उनका ट्रस्ट जीतना जरूरी है. अगर वो आपको ट्रस्ट करते तो believe me, अगर आप पेड़ के नीचे पढ़ाओगे ना तो भी वो आपसे पढ़ेंगे. ओके, अगर आप 44-45 के टेम्परेचर में अगर पावर कट है और उसमें आप पढ़ाओगे तो भी वो पढ़ेंगे. बट अगर कहीं ना कहीं आपकी नियत और आप वो ट्रस्ट खो देते हो तो बिलीव मी दैट डिजिटल क्लासरूम
that AC classroom will not work. So to all junior teachers, my message to all junior teachers that build that trust in students. Okay, never show your attitude to students. Okay, try to connect each and every student. जैसे तने ने बताया, all students are different. So reach to that particular students, and always our tagline is learn like teacher and teach like student. So whenever I teach, I always think that I am a student. Okay, 11th standard का बच्चा क्यों मुझे सुने? Because I am having this degrees? No. वो मुझे इसलिए सुनना चाहिए कि उसको कुछ मेरे से नॉलेज मिल रहा है. All these degrees, all this, your value addition are zero if you are not connecting to students. So connect to all students in best possible manner. That's the message to all junior teachers, and all the best to all students and teachers. And I am very much happy today on this Teachers Day, and you all made my day. Thank you so much. Thank you so much, Mahesh sir, and every teacher present over here. कि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है, to guide someone on the right path. Okay, thank you so much, Mahesh sir. Hitesh sir, would you like to have a message for the students, sir, on this auspicious day? Yeah, first of all, let me thank to the Balkishan ji for basically the vision that he has put and given to us for doing such kind of program. And let me tell you, friends, on today's date, he has done 11 programs throughout India, and this is a real tribute to the teachers as well as students, and it will give a good memory to the students to connect with that teachers, right? Because whenever a student reaches at certain level at his professional career, it becomes sometimes very difficult for the students to reconnect with his teacher. So this is a right platform given by the Balkishan ji. Once again, I thankful to you. I also thankful friend of mine, Tang, and I wish all the best to all of them. Thank you. Thank you so much, sir. And finally, I would like to ask the speakers if they want to give any message to the students. Jyot sir, Dhruvam sir, and Tanay sir. If I can just add one, I would like to just add one thing, that see, all your teachers, so like Mahesh sir has done for us, all the teachers have something good for you in their mind. They have a vision for you as well, because they connect with you in that particular manner. So just you need to follow their guidance, and if they'll always lead you to the right path. That's my only advice, or kind of my learnings, and how I have been able to do the things which I have been able to. Thank you so much, Tanay sir. Yes, Jyot sir. Yeah, so everything as Mahesh sir, Hitesh sir, Balkishan sir said, and what Tanay bhai also added, it's all about trusting our teachers and knowing that they only think of our well-being, and following their guidance, which will always reap good fruits. Yeah, so that's it from my side also. Thank you so much, Mahesh sir. Dhruvam sir. Dhruvam sir. Dhruvam must be busy with weekend, I believe. Okay. So with due permission, can I end the session, conclude the session? Okay. So yeah, before concluding the session, one small शायरी. Okay. खुद लिखा है नहीं, but फिर भी accept. शायर हमारा शायर है. इरशाद. Yes. सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप. झूठ क्या है, सच क्या है, ये बात समझाते हो आप. जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हो आप. Thank you so much. Thank you everyone for sparing their valuable time and attending this beautifully organized program by CA Balkishan Agrawal sir,
thank you so much for giving me the opportunity once again. Thank you to our respectable teacher and dignitaries, speakers, and not to forget, हमारी public. Okay, thank you so much. आपकी बिना program possible नहीं होता. Thank you so much. थैंक And यू once वेरी again, मच। और happy इतना Teachers' Day. अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली ये कोविड टाइम था तो हमें वर्चुअली करना पड़ा, और जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होगी, वडोदरा इज वेरी नियर टू अस सूरत, तो डेफिनेटली हम मिलकर भी कुछ अच्छा इवेंट करेंगे। और आपको सुनने के बाद तो ये है कि जो एक एनर्जी होती है वो आप मिलकर ही एक्सचेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली वी विल मीट सून। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much.